Good morning, students. Today our topic of discussion is industry's long run supply curve. Industry's long run supply curve, that is how a industry derive the supply curve in the long run. We can understand, we can explain this with the help of three different cost conditions. One is increasing cost, the other one is constant cost and decreasing cost. So let us first concentrate on the increasing cost industry. See, this figure is for the industry and this is for the firm. We know that the industry attains the equilibrium price with the help of the free market forces of demand and supply. So if this is the demand curve and this is the supply curve, the intersecting point will give you the equilibrium, where equilibrium price is this and equilibrium output is this. Now, once this price is set by the industry, this will be followed by the firm. At this particular price, the AR as well as the MR curve of the firm are constant and AR is equals to MR, and both the curve are horizontal straight line parallel to x-axis. Now we will draw the LAC curve like this, and then we will draw the SMC curve like this. Because we are talking about the long run supply curve, so both the short run as well as the long run concept will come, and why it will come I will explain you later. First, keep this in mind that in unit 2 we got this now, that there are innumerable short run cost curves were there, but the ultimate equilibrium point is the minimum point of the LAC. इधर equilibrium नहीं होता, equilibrium होता है जो LAC कर्व का मिनिमम पॉइंट में जो SAC कर्व उसको टेंजेंट होता है वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है. ठीक है. सो इफ दिस इज द डायग्राम देन दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट. देखो बहुत सारा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, लेकिन यहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट्स है, लेकिन ये सारा हम लोगों का इक्विलिब्रियम नहीं होगा. इनमें से जो सबसे मिनिमम में है, और सबसे मिनिमम में कौन सा होगा, जो LAC का मिनिमम को टेंजेंट होगा, तो वही इक्विलिब्रियम होगा. सो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट ऑफ द फिगर बाय इग्नोरिंग ऑल द अदर पार्ट्स. क्लियर? So if this is the LAC curve, LAC1 suppose, then this is your SAC1. Since we are talking about a particular time period where demand is this and supply is this, at that particular period your SAC and LAC is this, and we are going to draw the SMC curve like this, SMC1. Okay, so this is the equilibrium point of the firm, where the equilibrium output of the firm is OQ1 suppose. Okay, now at this particular point, why this is your equilibrium point? Because at this particular point your MR is equals to your MC, and your MC is cutting your MR from below. So both the conditions of equilibrium are satisfied at this particular point. So this is your equilibrium point of the firm, where the equilibrium price is this and equilibrium output is this. Okay, now suppose let us consider that for any reason the demand of the industry product increases. ठीक है, तो कुछ भी रीजन की वजह से मान लो कि इंडस्ट्री का डिमांड इंक्रीज हो जाता है. सो इफ द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री प्रोडक्ट इंक्रीजेस, देन द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. So suppose the demand curve shifts towards right from DT to D1, D1. So when the demand curve shifts towards right, it is quite obvious that the price of the product is going to increase from, suppose it was P1, now it is P2. So price has increased from P1 to P2. Once this price is set by the industry due to increase in the demand of the product, this particular price will be followed by the firm P2.
Okay, now once this price is increased due to increase in the demand of the product, the price of the product has increased. Now see, our supply has not changed, only the demand has changed, and as a result price has also changed. So accordingly your AR curve will also shift and your MR curve will also shift, because we know that if this is the AR at price 10 and now if price increases to 20, then your AR will also become 20 and your MR will also become 20. But at this particular price, since your AR is more compared to that of your AC, see, this is your AR curve and this is your AC curve. The minimum point of AC is this and this is your AR. So if your revenue is more, that is if your AR is more compared to that of your AC, hence the firm is earning supernormal profit at OP1 price, because we know that a firms earn supernormal profit when his AR is greater than his AC. That means his income is more compared to that of his cost. So this is your cost curve. You cannot change the cost curve because supply is fixed. So once you have supplied the product, your cost will remain constant. वो मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट डे का वीडियो में, मिलेगा, चेक कर लेना अगर समझ नहीं आता है तो अगर तुम्हारा डिमांड सिर्फ इंक्रीज होता है एंड योर सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, इफ योर सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट देन योर कॉस्ट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट, एंड विद द चेंज इन प्राइस योर रेवेन्यू इज गोइंग टू change. Okay, so this is your new equilibrium point, because at this equilibrium point your MR curve and MC curve is equal and your MC is cutting your MR from below. So this is your equilibrium point T2. At this particular equilibrium point your quantity is Q2. Now the other firms, we know that one assumption of perfect competition is that there is no restrictions in the entry and exit of firms. So if the price of the product increases, from OP1 to OP2, then with the increase in the price your revenue will change, and we have seen that our cost is less and our revenue is more. That means the firms in perfect competition is earning supernormal profit, and when this firm, the existing firms will earn supernormal profit, that is excess profit in the market, then the other firms in the industry will get attracted into the industry. The other firms in the market which are outside the industry will get attracted into the industry, because the existing firms are earning supernormal profit. So when the other firms outside the industry are getting attracted into the industry, they will enter the industry and they will start producing the commodity which the sellers are selling. So when they will start, the other firms that are attracted, that came into the industry, the new firms, they will now produce they will now produce the commodities that we are selling earlier. Now when the other firms, the new firms will produce, obviously the supply of the industry will increase. See, try to understand, when the demand increases, prices increase. This price is followed by the firm, and accordingly AR and MR has changed. Since supply is constant, your cost is less, your revenue is more. That means the existing firm in the industry are earning supernormal profit. When the other firms outside the industry will see that the existing firms are earning supernormal profit, the other firms will get attracted into the industry, and as a result, the new firms that came into the industry, they will start production, and as a result supply of the industry will increase and the supply curve will shift rightward. Okay, so suppose this is the shifting of the supply curve. Earlier it was SS, now it is, earlier suppose it was S1, now it is S2. So the new demand curve is this, and now the new supply curve is this. So this is the point of equilibrium E2. So at this equilibrium point, the price of the product is P1, yeah, P3, suppose P3.
Now once this price is set by the industry, this price will again be followed by the firm. So this is the price P3. At this particular price, when due to increase in the supply, the price of the product has decreased, तो प्रॉफिट क्या होगा, थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में प्रॉफिट थोड़ा कम होगा. अब क्यों कम होगा, रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारा फर्म्स बाहर से अंदर आ चुका है, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट कमेगा ही. अब एक और चीज देखो, यहाँ पे जब प्राइस P2 से P3 हुआ है, suppose it was 20, then it is 18 suppose. So when the price is 18, your AR will also change and your MR will also change. So your MR will also change. Now what is your equilibrium point? See, keep this in mind that this is not your equilibrium point. Even if your MC is cutting your MR from below. Why this is not your equilibrium point? Because now your supply has changed. So if supply of the industry product changes, then your cost will also change. क्योंकि पहले जितना सप्लाई था उसका जो कॉस्ट था, अभी जब नया फॉर्म्स मार्केट में एंटर हुआ है तो उनका कॉस्ट चेंज नहीं होगा, तो टोटल मार्केट का कॉस्ट चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू ड्रॉ अनदर एसएसी एंड अनदर एलएसी कर्व. सो सपोज अब हम लोग थोड़ा इधर उधर कहीं पे भी तुम लोग कर सकते हो, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि इधर करना या उधर करना, कहीं पे भी कर सकता हूँ. तो सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ, तो सपोज दिस इज योर SAC2 curve and this is your LAC2 curve. LAC2 curve. So this is your SMC2. So why your cost conditions has changed? Because the supply of the industry product has changed, and if the supply of the industry product changes, then your cost of production will also change. And now at the new prices OP3, where the different cost conditions we have drawn, and this is now our equilibrium point E3, where equilibrium output is suppose OQ3. अब तुम लोग थोड़ा इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेन हम लोगों को लॉन्ग रन सप्लाई कर्व दिखाना है और यहाँ पे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व नहीं दिखेगा. तो अब देखो यहाँ पे, अब एक और चीज कंफ्यूजन हो सकते हैं कि क्यों एक साथ हम लोग SAC LAC कर रहे हैं. रीजन है कि we are talking about long run, okay? So in the long run there are innumerable short run cost curve, but the equilibrium short run cost curve वही होता है जो LAC का मिनिमम पॉइंट में टेंजेंट हो. तो मान लो कि ये एक लंबा टाइम, थोड़ा लंबा टाइम पीरियड के लिए ये है, तो इफ दिस इज द लॉन्ग पीरियड, देन द शॉर्ट पीरियड विल बी द टेंजेंट वेयर इट विल बी टेंजेंट टू द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC. सिमिलरली जब SAC2 हम लोग ड्रॉ करेंगे सप्लाई इंक्रीज होने के बाद, तब भी LAC SAC करेंगे, क्योंकि LAC का मिनिमम में जो शॉर्ट रन कॉस्ट करेगा, जैसे मैंने ये यहाँ पे बोला था ना कि बहुत सारा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है, लेकिन मिनिमम पे ही हम लोगों ने कंसंट्रेट किया, वही बात है. And this is the equilibrium point because you have drawn your SMC curve like this. So at this point where your SMC is cutting your MR from below, so this is your equilibrium point of the firm. Now at this particular OP3 price, the firm is enjoying only normal profit. So I told you earlier that in the long run a firm always earns नॉर्मल प्रॉफिट, ओके. और मैंने ये भी बोला था ना कि हम क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर एक्सेस प्रॉफिट हो तो बाहर से फॉर्म्स आ जाता है, तो वो एक्सेस प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता है मार्केट से. और अगर कभी लॉस हो तो कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्म्स मार्केट छोड़ देते हैं, तो वो लॉस भी मार्केट से गायब हो जाता है. तो क्या रहता है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट. तो वही दिखाया कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट था, लेकिन अगर डिमांड कभी बढ़ता है, हो सकता है इंडस्ट्री का डिमांड बढ़ जाए, तो अगर डिमांड कभी बढ़ता है तब डिमांड के वजह से प्राइस बढ़ेगा, एंड देयर विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द मार्केट. एंड व्हेन देयर विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द मार्केट, द अदर फर्म्स विल गेट अट्रैक्टेड इनटू द इंडस्ट्री, एंड एज अ रिजल्ट योर supply
will change and it will increase, and as a result your cost conditions will change and you will get this type of curves. Now at OP3 price, your AC is equals to the new AR, and since your AR is equals to AC, hence the firm is earning only normal profit in the long run. Now see, our topic is industry's long run supply कर्व. तो यहाँ पे long run supply कर्व तो हम लोगों को कहीं मिला नहीं, तो अब long run supply कर्व हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? देखो कैसे मिलता है. long run supply कर्व हम लोगों को इंडस्ट्री का चाहिए, फॉर्म का नहीं, तो इधर मिलेगा. तो कैसे मिलेगा? यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को टच करके जो कर्व हम लोग करेंगे उससे मिलेगा. तो सेटल कहाँ पे था? देखो, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट वाज दिस. ओके, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, लेकिन यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं था क्योंकि वो जब ये हुआ था तब एक्सेस प्रॉफिट हो गया था, अदर मार्केट्स आने लग गए, तो वो इक्विलिब्रियम कभी बना ही नहीं. ठीक है, उधर से जाके हम लोग इधर आ गए. तो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यू हैव टू मार्क 2 points. One is the original equilibrium point and the other one is the new equilibrium point. So once you join these 2 points, then you are going to attain a curve, and this curve is, see, this curve is the long run supply curve. By joining the 2 equilibrium points, one original and the other one the latest one. So by joining both the points, you are going to attain a curve, and this curve is known as the long run supply curve, that is LRS. And since it is an upward sloping line, so that is why it is known as increasing cost industry. अगर long run supply curve horizontal straight line होता तो उसको बोलेंगे constant cost, और अगर long run supply curve diminishing हुआ या decreasing हुआ या downward हुआ तो उसको बोलेंगे decreasing cost industry. So this is all about the increasing cost industry, and since the long run supply curve is upward sloping, that is why it comes under increasing cost industry. Now let us concentrate on the constant cost industry. See, the explanation are all the same. First, in all the 3 diagrams, you have to draw the demand curve and the supply curve. The intersecting point will give you the equilibrium price and equilibrium output. Once this price is set by the industry, this will be followed by the firm. LAC draw करेंगे, SAC draw करेंगे, ये करेंगे, MC, SMC, SAC, LAC. So this is your equilibrium point where equilibrium output is this. Now why this is your, okay, leave, ये equilibrium point है और AC is equals to AR. ये अगर price है तो this is AR. Since AR is equals to AC, hence the firm is earning normal profit. Now you are going to draw. Suppose the demand of the product increases. So if the demand of the product increases, then demand curve will shift towards right. And if the demand curve shifts towards right, this is your new equilibrium point where equilibrium price is this. Once this price is set by the industry, this will be followed by the firm. P1. Okay. Now, अब देखो, सारा explanation पहले जैसा है. मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझा देती हूँ. सारा explanation तीनों मतलब कॉस्ट इंडस्ट्री का तीनों का एक्सप्लेनेशन सेम होगा. सिर्फ तुमको अब लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, तो मैं यहाँ पे कंसंट्रेट करती हूँ. तो मुझे पता है कि ये होगा, प्राइस होगा, उसके बाद आउटपुट बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, एक्सेस प्रॉफिट हुआ होगा, वहाँ पे एक्सेस प्रॉफिट होगा तो अदर फर्म्स इंडस्ट्री में घुसने का ट्राई करेगा. इंडस्ट्री में अगर अदर फर्म्स घुसने का ट्राई किया तो उन लोगों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे तुम्हारा सप्लाई क्या होगा, चेंज होगा. तो तुम कुछ इस तरीके से सप्लाई को चेंज करोगे ऐसे. तो ये हो गया तुम्हारा नया सप्लाई कर्व, क्योंकि नया फॉर्म्स जब मार्केट में आता है वो लोग प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई तुम्हारा चेंज होगा, और तुम्हारा सप्लाई अगर चेंज हुआ तो ये तुम्हारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ और ये तुम्हारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ. इन दोनों को ज्वाइन करके तुम जो कर्व ड्रॉ करोगे उसको बोलते हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व. एंड सिंस दिस लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इज ए horizontal straight line, that is why it is depicting the constant cost industry. That is, in the long run, the cost is constant irrespective of change in demand and change in supply. Your cost is constant. That is why it comes under the constant cost industry. Here, again, we will draw the demand curve, we will draw the supply curve. This is the equilibrium point where equilibrium price is this, output is this. Now, our demand curve will change. Wait.
our demand curve will change like this. So if demand curve changes, then this will be the equilibrium point. इधर प्राइस होगा, इधर आउटपुट होगा. तो ये अगर प्राइस हो गया पहले वाला, अभी नया प्राइस ही है, तो जब फॉलो करेगा तो कॉस्ट तो कंडीशन सेम रहेगा एंड देयर विल बी अगेन एक्सेस प्रॉफिट इन द मार्केट. अगर एक्सेस प्रॉफिट होगा तो बाहर से फर्म्स अंदर आएगा और ये लोग प्रोडक्शन करेगा. ये लोग प्रोडक्शन किया तो बहुत ज्यादा ये लोग अगर प्रोडक्शन करने लग गए तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई चेंज होगा. और सप्लाई कर्व को हम लोग कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि ऐसे हो गया सप्लाई. तो पहले जितना सप्लाई था अभी सप्लाई चेंज हुआ है. तो हम लोगों का ओरिजिनल पॉइंट क्या था, ये था, और अभी हम लोगों का ओरिजिनल पॉइंट क्या है, ये है. तो अब देखो, मतलब और अगर हम लोग और थोड़ा सप्लाई को इस तरीके से कर लेना तब ज्यादा समझ आएगा. तो ये हम लोगों का सप्लाई हो गया. तो इस तरीके से अगर हम लोग कर्व को ड्रॉ करेंगे तो सी द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. एंड व्हाई दिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री. सो कीप दिस इन माइंड दैट इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस. कैसे देखो, एक्सप्लेनेशन जब सेम है तो क्यों एक इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों कांस्टेंट है, वो हम लोगों के सप्लाई और डिमांड के ऊपर चेंज करे. इधर मैंने देखो डिमांड कर्व को बहुत ज्यादा चेंज किया और सप्लाई को थोड़ा सा चेंज किया, तब जाके हम लोगों ने इंक्रीजिंग कॉस्ट हम लोग कर पाए. ठीक है. कांस्टेंट में क्या करेंगे, डिमांड जितना चेंज होगा सप्लाई को भी उतना ही चेंज करेंगे, तब कांस्टेंट रहेगा. और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिमांड को थोड़ा सा चेंज करेंगे और सप्लाई को बहुत ज्यादा. मैं एक और बार तुमको ये सब करके दिखाती हूँ, तब तुम लोगों का क्लियर होगा. सपोज दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, डिमांड सप्लाई, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज प्राइस, दिस इज आउटपुट. ओके, एक्सप्लेनेशन इधर का तुम लोगों को पता है. तो ये प्राइस हुआ, कॉस्ट उधर नॉर्मल प्रॉफिट था. अब अचानक सपोज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो ये डी से D1 हो गया. तो ये हम लोगों का नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ पे ये होगा हम लोगों का प्राइस. तो इस प्राइस में द फर्म, वी सो दैट द फर्म इन द एग्जिस्टिंग फर्म्स इन द मार्केट आर अर्निंग सुपरनॉर्मल प्रॉफिट. सो व्हेन दे आर अर्निंग सुपरनॉर्मल प्रॉफिट, अदर फर्म्स विल गेट attracted into the industry, and as a result the production level in the market or in the industry, it will increase and your supply curve will change. तो supply curve को ज्यादा change करना तब जब हम लोगों को constant दिखाना है. तो ये हम लोगों का नया डिमांड कर्व है और ये हम लोगों का नया, तो ये होगा कांस्टेंट. तो ये हम लोगों का ओरिजिनल हो गया, ये हो गया कांस्टेंट. तो इसको अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ना, एंड सिंस द एलरिस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, it shows that the industry is